नमस्ते, मैं हूं पायल रोहातगी। जी हाँ, आज हम कपड़े फाड़ेंगे फिर से आलिया भट्ट के, क्योंकि आलिया भट्ट की नई फिल्म आ रही है सड़क 2, जो उनके पिताजी ने प्रोड्यूस करी है। जी हाँ, महेश भट्ट साहब। मैं आदर से पुकारूंगी उनको, क्योंकि आदर देना मुझसे बड़े उम्र के लोगों को मेरा आई थिंक फर्ज बनता है, क्योंकि मैं एक अच्छी भारतीय नारी हूं। मगर जो लोग अपनी पिक्चर के अंदर एक थॉट प्रोसेस प्रमोट करें, जो थॉट प्रोसेस के अंदर एक डायलॉग होता है सड़क 2 के अंदर कि गुरुओं की वजह से मैंने अपने किसी को खोया था, अगर गुरुओं की जगह हम पादरी या मौलवी को डाल देते और फिर ये लाइन को बोलते तो बहुत मजा आता। बहुत ज्यादा फतवे इशू हो जाते, मगर फतवे इशू करते ये लोग अपने खुद के कौम के लोगों के खिलाफ। आई डोंट नो, आई एम वेरी कंफ्यूज्ड। तो जो लोग पाकिस्तान के आर्टिस्ट को प्रमोट करते हैं और भारत में डर कर रहते हैं, मगर डर कर अपने आप को सुपर स्टारडम स्टेटस के तहत जुनैद लिंचिंग की नकली कहानियां फैलाते हैं और फिर कहते हैं कि रिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट को मीडिया ट्रायल खारिज कर देना चाहिए। वो सुप्रीम कोर्ट जिसने जुनैद की लिंचिंग को लिंचिंग नहीं कहा था कि जुनैद की मौत सीट शेयरिंग इंसिडेंट की वजह से एक ट्रेन में हुई थी, बीफ की वजह से नहीं हुई थी। तो ये झूठे लोग अब अपनी पिक्चर सड़क 2 में गुरुओं का नाम ले रहे हैं। इनको अपने मुंह से गुरुओं का नाम नहीं लेना चाहिए, मौलवी और पादरी का नाम लेना चाहिए, क्योंकि ये सब करने से शायद उनको थोड़ी बहुत लाइक्स मिल जाए, क्योंकि गुरुओं का नाम लेंगे तो उनकी पिक्चर को सिर्फ डिसलाइक्स मिलेंगे। सो प्लीज कंटिन्यू डिसलाइकिंग सड़क 2। आफ्टर ऑल वी हैव टू अपोज nepotism and obviously people who say that RSS was behind 26/11 Mumbai attacks. Namaste. Namaste, this is Kirti Sanon. I'm an outsider. But my first Hindi film was with Sajid Naryadwala banner. So you can understand that I'm an outsider with contacts. I know how to get funding for the film and I make sure that I am there. My sister is now getting promoted by Akshay Kumar. Yes, Akshay Kumar. So you can understand we have a full family planning happening to join Bollywood. I cannot talk about nepotism. I cannot get into all that casting couch because I fall in love with my directors, producers, actors. At one point, I was in love with Sushant Singh Rajput during Rapta shooting. But after the film, my love also went away because that's how it works in Bollywood. You fall in love, you fall out of love. But in spite of that, I did go to Sushant Singh Rajput's funeral. I do my cryptic posts about his life and death and justice for him. That's all about it. I can't do anything further. I have to think about myself, my family, my future. And obviously, I'm a person who is always falling in love, falling out of love. I can't be just stuck in the past. I have to think about my future. And my future is to support Bollywood lobby and Bollywood mafia. Because my sister is also getting into Bollywood. So we all have to think about our future. And for that, we'll never talk about nepotism. We'll never talk about Bollywood mafia. We'll continue with whatever we are doing. We'll just fall in love with men and fall out of love. नमस्ते, दिस इज माधुरी दीक्षित नैने। जी हाँ, आई वॉज एन आउटसाइडर, मगर बॉलीवुड ने मुझे बहुत प्यार दिया। प्यार मिला सुभाष घाई से, प्यार मिला अनिल कपूर से, प्यार मिला संजय दत्त से। मगर जब संजय दत्त का नाम आया इन दैट टाडा थिंग, मैंने उसको छोड़ दिया। मुझे उसका प्यार नहीं चाहिए था, बिकॉज आई हैव टू थिंक अबाउट माई सेल्फ। इतनी मुश्किलों से करियर बनाया था मैंने, इन लोगों की नॉनसेंस से थोड़ा मैं उसे बर्बाद होने दे सकती थी। आई गॉट मैरिड, I went to US, I came back. Now look at me, I look so good. I've maintained myself so well. After all, my husband is a doctor, and what is Botox, fillers, everything just works well if injected well. After all, I believe in looking good. अब बात करते हैं about Sushant Singh Rajput. See, I don't have to support him. It was his problem. He had an issue with something. I don't know. Why should I get into it? He was my fan. That's his problem. Why should I get into it? When I never got into Sanjay Dutt's problems, why should I get into Sushant Singh Rajput's problems? Now, whether the government is right, wrong, I don't want to get into all this क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ पैसे कमाने आई हूँ. I'm just bothered about my career. It's a different thing that BJP comes to my house. Yes, during elections, before elections, Amit Shah ji visited me. मैंने उनके साथ फोटोग्राफ खिंचाई, बैठा, उनको indirect support दिखाया because obviously you have to support one party that is in power. But I don't have to support everything that is right.
I have to think about myself. I have to think about my future work. And for that, I need to support the Bollywood mafia. See, I'm Madhuri Dixit Nene. I'm an intelligent outsider.